You are the only voice for us. Don't forget it. Like you have come from Delhi, I have come from Chennai for you. Thank you. I am not a single person talking to you. I am representing consortium of Indian associations, which is over 350,000 industries. What are we witnessing? I have been a 3.5 decade entrepreneur. What are we witnessing today in this country? We moved from Skill India, Digital India, Make in India, Atmanirbhar, and finally ended where? Fund India. What is Fund India? FDI. We are opening, asking others to give money into us. Where are we? I am sick to see the entrepreneurs surviving. Out of 7 crore entrepreneurs, MSMEs, 30% are almost dead. Yeah. What is 30%? 2.1 crore. That 2.1 crore gives jobs for almost 20 crore of people. We are not bothered. The ECGLS scheme came for 45 lakhs beneficiary out of 7.5 crores. Where are we? We are seeing only the balance 60% and saying green shoots. I am seeing shooting myself as an entrepreneur. How are we progressing? What answer will I give to my children? Today, entrepreneur, you ask them, we are facing 3 M problems. Money, manpower, material. Banks are chasing, NBFCs are chasing. We are not able to open a newspaper today. Every page has got only about auction sale notice, possession notice. Big people are getting shaved. We are being shaved. You are the only voice for us. Don't forget it. Micro industries, 98% in this country. 98% is the micro industries. Micro industries must have a separate ministry. We cannot be combined with 100 crore company turnover. I am talking micro as a self-employed people. We are losing them. Today the dream of a startup is shattered. Today we are seeing we are not able to raise our voice. We are not able to express ourselves. We are not being heard. We are not being able to convey our pains. An entrepreneur can never ever cry openly. Remember that. If I cry openly, nobody will trust me. Nobody will give me business. No employee will stay with me. I don't hire people with just money. I hire people from my heart and love. I build this nation. I have built this nation for 35 years. Today I see wherever I go. I'm telling you, Mr. Rahul, I'm representing Consortium of Indian Association. People are painfully crying. Please raise it. Please speak for us. Thank you for coming to Coimbatore. Thank you for hearing me out. Thank you. Thank you very much. जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी, इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।